Some breaking news now. The wrestlers, the Dangal protesting wrestlers have just emerged from a 6.5-hour meeting with the Sports Minister Anurag Thakur. These are live images coming out. The wrestlers' Sports Minister meeting has just ended and they've just emerged from inside. Let's try and see if we can get some word from them. Bajrang Punia, Sakshi Malik visible in this frame. Looks like they're going to have something to say to the media after a 6.5-hour meeting. Let's listen in. It's outside Minister Anurag Thakur's home. Lots of TV cameras. India Today obviously out front. We'll get you their voice first here on the channel. Stand by for Sakshi Malik and Bajrang Punia about to speak. Audio check, audio check, audio check. अभी कहाँ बाइट दे रहे हैं? अभी आए नहीं। तुम लोग साले अपनी Big crowd outside Minister Anurag Thakur's home, where a 6.5-hour meeting has just taken place. Remember, this is the second time in the last 45 days that Anurag Thakur has met with the wrestlers. We don't know just yet if any breakthrough or compromise has been arrived at. Nothing to suggest that it has. But the wrestlers have spent over nearly 6 hours with the minister. The minister had invited them for talks earlier this morning. They've spent their time there. The street protest itself has wound up. Let's listen in. सर टायर से पैर में जाना अपना Nitin Srivastava is right up there. You can see him in the blue shirt trying to get a word in, always right in front. India Today's reporters always right in front. एक मिनट हमारी आराम से करो. हमारी बात हुई है. आराम से आप लोग. हमारी बात हुई है. हमारी बात हुई है. अभी वही बता रहे हैं. एक बार आप शांत रहे. सरकार से कुछ बिंदुओं पे बात हुई है और या साइड में रोक रहे हैं. साइड में रोक रहे हैं. 1 मिनट साइड में रोक रहे हैं. आप लोगों के बाइट दे के जाऊंगा. आप लोगों को देखो. अरे भाई महिला है. आप देखो एक बार. 1 मिनट साइड में लगा रहे हैं. 1 मिनट साइड में लगा रहे हैं. 1 मिनट. या तो आगे मत करो मैडम. साइड में रोके. रुक जाओ. रुको. पैनिक मत करो यार. पैनिक मत करो. आराम से होगा. पैनिक मत करो. Punia trying his best to fight through the media scrum to get a word in, but there are just too many journalists there. Let's hope that he is able to speak so we get a sense of what's happening. That's India Today's Nitin Srivastava there in the blue shirt. You can see he's right up front trying to get a word in from Bajrang Punia. He and Sakshi Malik in the same vehicle, getting away from there. We're going to stay with the sound from the ground in case Bajrang Punia rolls down that window and speaks to the press. Trying to get a word in. It's important because what happened inside this 5.5-hour meeting is crucial to what happens next in this protest. Have there been made any assurances, any promises? We don't know just yet. Let me get a quick word in from India Today's Polami Saha. Polami, Bajrang Punia, we're waiting on a word from him. Anything you're hearing, anything you can tell us, Polami?
तारीख तक का। Well, Shiv, we're still waiting for some clarity on that because as you can see, there was a lot of chaos as, of course, the wrestlers left from Anurag Thakur's residence, the Union Sports Minister's residence. There's a possibility that they've been given time till 15th of June. Again, something that I'm waiting on confirmation about. Clearly, it's not come from the Union Sports Minister's office at the moment, but there could be a word that could be coming in very soon about that clarity as to what exactly, happened after. Speaking, let's just listen. एक दो दिन में हम उनकी सहमति से बात करके उनको बता देंगे। तो सर आप लोग सहमत हो? ये चीजें हम बात हुई है, तो वो चीजें बजरंग वो गिर गया न्यूज 18 का आपको ये ली भाई। बजरंग ब्रिज भूषण की गिरफ्तारी पर क्या बात हुई? देखिए वही सरकार ने बोला कि भाई हम 15 तारीख तक जो पुलिस की प्रक्रिया है वो पूरा करके आप लोगों को बता देंगे। और ये बताया जा रहा विनेश फोगाट नाराज थी इसलिए शामिल नहीं हुई, क्या वजह थी? आज ये सारी बोलने की बातें हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से ये लोगों के पास आती है। अभी मीटिंग और चलेगी और वार्ता का दौर चलेगा, अनुराग ठाकुर से और वार्ता होगी। देखिए अगर कोई और बात हुई तो आगे फिर बात ठीक होगी। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। भजन भाई एक बार आराम से जाओ भजन भाई जाओ। Bajrang Punia telling the journalists assembled there, the government has assured us on the probe that is underway and that police action will be completed, the police investigation will be completed by the 15th of June, and that after that they will be briefed once again by the minister or the government. So assurances have been given to the wrestlers by the sports minister, but it is not clear what happens to the protest. Will the protest itself continue? In what form? What happens between now and June the 15th? We don't know just yet. Let's go across to Polami and Himanshu Mishra, both of them joining us. Polami, what are you hearing? Bajrang Punia says that the minister has made assurances that the investigation will be completed by June the 15th. What next? Well, yes, that is what the wrestlers are saying, that the government has told them that we'll let you know about the status of the investigation by the 15th of June. Remember that the Delhi police is already investigating this matter and they've already said that they will be filing a status report on it very soon, in a matter of days. Already, of course, this is an investigation which is ongoing. They've been to Lucknow, they've been to Gonda as well. They have spoken with Brij Bhushan Sharan Singh. They've spoken with the complainants in this case as well. The complainants have recorded their statement under section 164 of the CRPC as well. So Delhi police has already indicated that if they find evidence in this case, then they will be filing a charge sheet, and if they don't find any evidence in this case which supports the allegations that have been made by the protesting wrestlers, then they will be filing a closure report. So the status report by Delhi police will be filed very soon, and that is what the wrestlers were referring to as well, that the government has told us that we will tell you the status of the probe of the ongoing probe by the 15th of June. So you will know which way this investigation has headed in terms of what the Delhi police has found during its investigation. Remember that the wrestlers were adamant on their demand that they want WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh to be arrested. That's not a promise that the government can make them, because the government has no control over that. The government is not an authority or an agency which is investigating the matter. It is the Delhi police. So that is exactly what has been communicated to the wrestlers over these 5.5 hours. Anurag Thakur, in fact, Shiv, stepped out of his residence in order to, in fact, bid goodbye to the wrestlers, leave them to their car as well as they went away. Remember, very crucially, Shiv, Vinesh Fogart, who's also been one of the crucial faces of this agitation, was not present here during this meeting. So it was only Sakshi Malik, Bajrang Punia and Satyavrat Kadian, who is Sakshi Malik's husband and also a wrestler. So 15th of June is what the wrestlers are claiming. The government has told them, we'll let you know about the status of the probe. Let's listen to what Bajrang Punia just said. Once again, let's just listen to it before I go to Himanshu. जो गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है खेल मंत्री जी के साथ कि 15 तारीख तक 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है, और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। तो हमने
जो उन्होंने प्रपोज कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो वो चीजें सरकार ने मानी है। और जो हमारे साथ बातचीत हुई है वो हम जो हमारे समर्थक हैं, खास चौधरी है, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है, चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे। तो सर आप लोग सहमत हो? हिमांशु is also with me for more on this. हिमांशु, अगला कदम क्या होगा? अभी जून 15 तक जो जांच चल रही है वो खत्म हो जाएगा, ये अश्योरेंस मिला है रेसलिंग चैंपियंस को। तो अब से लेकर जून 15 तक क्या होगा हिमांशु? देखिए, मुझे जहां तक लगता है शिव कि 15 जून तक तो जो आंदोलन है वो नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है ब्रिज भूषण को लेकर जो भी आरोप लगे हैं उसको लेकर जो भी चार्जशीट है वो पुलिस के द्वारा 15 जून से पहले जो है कोर्ट में सबमिट कर दी जाएगी और उसके बाद जो है कोर्ट की हियरिंग होगी। अब देखना ये है कि चार्जशीट में क्या ब्रिज भूषण के ऊपर उन सब आरोपों को लेकर क्या रिपोर्ट के अंदर तथ्य पेश किए जाते हैं, क्योंकि ब्रिज भूषण से भी जो है वो 2 बार जो है वो पूछताछ हो चुकी है 6-6 घंटे की, और उन्होंने भी उन सब आरोपों का ये कहें कि खंडन किया और ये कहा कि जो उन पे आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ उनके पास सबूत है, और उसी के कवायद में जो है 200 लोगों के स्टेटमेंट जो है किए गए। जैसे कि आप नाबालिग लड़की ने का आरोप था कि रांची के अंदर जब वो मेडल पहनाया जा रहा था तो उनके साथ छेड़छाड़ की गई, तो उस वक्त जितने लोग मौजूद थे उन सबके स्टेटमेंट हुए। साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि कजाकिस्तान में जो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था वहां पर उनके साथ छेड़छाड़ की गई, तो कजाकिस्तान में जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल था रेसलिंग का वो उनके सभी मेंबर्स से अलग अलग बातचीत की गई है। साथ ही साथ विनेश फोगाट ने कहा था कि 16 और 17 अक्टूबर को जो है दिल्ली में उनके साथ छेड़छाड़ की थी ब्रिज भूषण शरण सिंह ने कहा 16 अक्टूबर 2017 को वो लखनऊ में थे, एक नेशनल चैंपियनशिप के ट्रायल में थे, और 17 तारीख को वो गोंडा अपने गृह क्षेत्र में थे, पब्लिक फंक्शन में थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एसआईटी की टीम वहां गई थी जांच करने के लिए। अब वो रिपोर्ट पे होगा कि रिपोर्ट में ब्रिज भूषण के क्या आरोप तय हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, बजरंग पूनिया ने यह भी कह दिया कि जो पहलवानों के ऊपर एफआईआर थी उसको विड्रॉ किया जाएगा, ये सरकार की तरफ से एश्योरेंस दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो पहलवान एक तरीके से सरकार पे दबाव बनाने में कामयाब रहे कि जो एफआईआर उनके ऊपर की गई है उसको वापस लिया जाए। और ब्रिज भूषण को लेकर सरकार ये पहलवानों को मनाने में कामयाब रही कि देखिए एक कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा होने से पहले अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो गलत संदेश जाएगा। कानूनी प्रक्रिया पूरे होने दीजिए, मैटर सब जुडिस है, कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो सबको स्वीकार होगा, और अगर कोई दोषी होता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो यानी कि ब्रिज भूषण शरण सिंह के ऊपर अभी भी जो है वो कह सकते हैं कि तलवार लटकी हुई है। कोर्ट में क्या रिपोर्ट दी जाएगी इसके आधार पर कोर्ट तय करेगा। तीसरी चीज, जो इलेक्शन है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो 45 दिन में कराने हैं, उसके लेकर एक एडहॉक कमेटी जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से बना दी गई थी, जो पूरी डे टू डे एक्टिविटी और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को देख रही है। अब इन प्लेयर्स का ये कहना था जब इलेक्शन हो तो फेयर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी चीज छिपाई नहीं जानी चाहिए। तो उसको लेकर भी सरकार की तरफ से इनको एश्योर किया गया है कि जो भी इलेक्शन होगा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। और उस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात यह है, ब्रिज भूषण शरण सिंह तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनके 12 साल कंप्लीट हो गए हैं एज ए प्रेसिडेंट। अब उनके बेटे भी इस चुनाव की प्रक्रिया से दूर होंगे, यानी कि वो भी फेडरेशन में किसी ऑफिस बेरर के इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से सरकार की जो है वो सहमति बनी है। अब इस पर 15 तारीख को जब कोर्ट के अंदर ये मैटर जाएगा, रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद हो सकता है कि एक राउंड और इन पहलवानों की जो है वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत हो और फिर बीच का रास्ता निकाला जाए कि देखिए अब तो रिपोर्ट भी चली गई है और इस रिपोर्ट के अंदर जो भी चीजें पुलिस की तरफ से दी गई हैं वो बिल्कुल सही है, उसको लेकर क्या होगा और कोर्ट जो फैसला दे वो सबको मान्य होना चाहिए, चाहे वो ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आए या ना आए। तो इसको लेकर जो है वो सहमति बनाने का काम मुझे लगता है वो 15 जून के बाद होगा, क्योंकि 15 जून तक तो ये कहा गया कि रिपोर्ट जो है वो सबमिट होगी। शिव Okay, Himanshu, thank you very much. Bajrang Punia speaking. Let's listen in.
हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है, चाहे वो किसान संगठन है, हम सबके सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे ये चीजें बात हुई है, ये चीजें हम बात हुई है, तो वो चीजें ये लिए भाई। चलो भाई, गिरफ्तारी पर क्या बात हुई? देखिए वही सरकार ने बोला कि भाई हम 15 तारीख तक जो पुलिस की प्रक्रिया है वो पूरा करके आप लोगों को बता देंगे। और ये बताया जा रहा विनेश फोगाट नाराज थी इसलिए शामिल नहीं हुई, क्या वजह थी आज? ये सारी बोलने की बातें हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से ये लोगों के पास आती हैं। अभी कोई नाराज नहीं है। और वार्ता का दौर चलेगा, अनुराग ठाकुर से और वार्ता होगी। देखिए अगर कोई और बात हुई तो आगे फिर बात निश्चित होगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। Okay, Polami is still with us. Polami, looks like Minister Anurag Thakur is likely to brief the media as well. He's likely to make some kind of a statement. From what Himanshu was just telling us, it looks like some substantive headway has been made in this marathon meeting for both sides. That's right, Shiv. In fact, we're getting a confirmation. You heard from the wrestlers over there as to what they claimed happened in that meeting with the Union Sports Minister over the last 5.5 hours. Now the government is confirming. Yes, Anurag Thakur will, of course, speak with the media as well. But they're confirming the 2 points that have been, in fact, made by Bajrang Punia and Sakshi, who spoke with the media. That 15th of June is when they've been assured till when the probe will be completed. And Delhi Police will, of course, file a status report, whether it's a charge sheet, whether evidence is found against Bajrang Punia, I beg your pardon, Brij Bhushan Sharan Singh or not, or whether it's a closure report because no evidence is found. That, of course, we'll find out when, of course, that status report is filed by Delhi Police in court. The second point, which has been made and has been confirmed by the government as well, is that the government has assured the wrestlers that they will be withdrawing the cases against them, the FIRs which were lodged against the wrestlers when they tried to proceed towards the new Parliament building on the day of its inauguration on May 28th. So these points have been confirmed by government. Of course, we'll get an official word from Union Sports Minister Anurag Thakur in a short while from now, Shiv. Okay, Polami, we'll keep coming back to you. We're going to stay on this story because Anurag Thakur, the minister, is about to emerge from his residence. He's going to speak. So we've heard from Bajrang Punia. We're going to try and get in touch with also Vinesh Phogat, who wasn't at that meeting, Sakshi Malik, who was at that meeting, and the minister. All of them will hopefully be speaking to us.